Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss chapter 3, the story of Indian democracy of book 2, social change and development in India. Today in this video we will discuss the Indian constitution, the Karachi Resolution, assembly debates, constitution and social change and social justice. The Karachi Resolution. Many of the issues regarding the meaning of democracy were thought much before India became free. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the assembly and Dr. Ambedkar was the chairman of the draft committee. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. The Karachi Resolution reflects a vision of democracy that meant not just formal holding of elections but a substantive reworking of the Indian social structure in order to have a genuine democratic society. कहते हैं अगर देखा जाए तो 19 as far back as in 1928 मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस लीडर्स उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो संविधान था उसे ड्राफ्ट किया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो असेंबली के चेयरमैन थे और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे. इन 1931 जो रेजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट और क्या कि उसमें क्या किया गया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, जो हमारे भारतीय संविधान है वो कैसा होगा. और कराची रेजोल्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है विजन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका मतलब सिर्फ इलेक्शंस करवाना नहीं है बट a substantive reworking of the Indian social structure in order to have a genuine democratic society कि वाकई में वास्तविकता में ही वो एक लोकतांत्रिक समाज हो. The Karachi Resolution included the idea of equality, liberty and freedom. The Congress declares that the Swaraj government will accept the constitution that enables the Swaraj government to provide for किस चीज़ का उसमें provision होना चाहिए. Freedom of expression, association and meeting, freedom of religion, protection of all cultures and languages, all citizens shall be equal before the law, no disability in employment, equal rights and duties for all in regard of public wealth, schools, etc. All to have right to bear arms in accordance with regulations, no persons to be deprived of property or liberty. Religious neutrality of the state, free compulsory primary education, no titles to be conferred, capital punishment to be abolished, freedom of movement of every citizen, proper standard of life for industrial workers, all labor to be free from conditions of serfdom, special protection of women workers, children not to be employed in mines and factories. Proper standard of life for industrial workers. Rights of peasants and workers to form unions. Reform of system of land revenue and tenure and rent. Inheritance tax on graduated scale. Reduction of military expenditure by at least half. No servant of state ordinarily to be paid above rupees 500 per month. Abolition of salt tax. Protection of indigenous cloth against competition of foreign cloth. Total prohibition of intoxicating drinks and drugs. Currency and exchange in national interest. Nationalization of key industries and services, railways, etc. Relief of agriculture indebtedness and control of history. Military training for citizens. Karachi Resolution condensed to be printed on membership forms.
The Karachi Resolution clearly spells out the division of democracy that the nationalist movement in India had. It shows the values that were further given full expression in the Indian Constitution. The Indian Constitution was passed by the Constituent Assembly on 26th November 1949 but was implemented on 26th January 1950. जो कराची रेजोल्यूशन है क्लियरली जो है विजन ऑफ डेमोक्रेसी है उसको स्पेल आउट करता है उसकी विजन को और जो है इट शोज द वैल्यूज दैट वर फर्दर गिवन फुल एक्सप्रेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 26 नवंबर 1949 में पास किया गया, लेकिन ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रेम्बल विच डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए रिपब्लिक। जो है हम इंडियन हमारे भारतीय संविधान का प्रेम्बल है जो कि हमें इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? रिपब्लिक। What does mean? The president is elected by the people. India has a federal system of government and has governments at the center and the states. Now, what is a preamble? It is a preface to the constitution, introductory part of the constitution and to the soul and spirit of the constitution. It briefly states what our political leaders, nationalists and makers of constitution wanted India to be. The preamble of the Indian Constitution seeks to ensure not just political justice but also social and economic justice. Equality is not just about equal political rights but also of status and opportunity. सिर्फ social economic justice नहीं है, equality जो है वो political rights में ही equal नहीं होनी चाहिए, status और opportunity भी equal होनी चाहिए सबके लिए. So what our preamble says includes we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a and to secure to all its citizens sovereign socialist secular democratic republic. Justice, what kind of justice? Social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity, and to promote among them all is fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Constituent Assembly debates. Democracy works at many levels, beginning with the vision of the Indian Constitution, for this is the bedrock upon which democracy rests in India. Significantly, the Constitution emerged from intense and open discussions within the Constituent Assembly. Thus, its vision or ideological content as well as the process or procedure by which it was formed was democratic. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैनी लेवल पर डेमोक्रेसी वर्क्स एट मैनी लेवल्स, बिगिनिंग विद द विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बेड रॉक है जिसके ऊपर इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो रेस्ट करती थी, आधार था उसका. और सिग्निफिकेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमर्ज हुआ फ्रॉम इंटेंस एंड ओपन डिस्कशंस. बहुत से डिस्कशंस इसके ऊपर हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. दस जो इसका विजन और आइडियोलॉजिकल कंटेंट था एज वेल एज प्रोसेस और प्रोसीजर बाय विच इट फॉर्म्ड वाज डेमोक्रेटिक, इसलिए वो जो पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर था वो सारा डेमोक्रेटिक था. द पॉपुलर डिमांड इन 1939 for a constituent assembly was, after several ups and downs, conceded by imperialist Britain in 1945, and in 1946 the elections were held, and in August 1946 the Indian National Congress Expert Committee moved a resolution in the Constituent Assembly. This contained the declaration that India shall be a republic where the declared social, economic and political justice will be granted to all the people of India. Right? 1946 में elections हुई और अगस्त 1946 में नेशनल कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी जो है उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिया है वो रिपब्लिक होगा, क्योंकि और जिसमें कि क्या डिक्लेयर किया गया कि इंडिया के सभी लोगों को हर तरह की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सबको मिलेगा. Now, difference between republic and democracy. We just now we talked that declared India to be republic. So, what is the difference? It is mostly
said that republic and democracy are one and the same, but these are fundamentally different concepts. In democracy, the majority rules according to their own whims, whereas in a republic, the government rule according to law. On matters of social justice, there are lively debates on whether government functions should be prescribed and the state should be bound down to them. Issues debated range from right to employment to social security and reforms to property rights to the organization of panchayats. तो इन सब इश्यूज को लेकर के बहुत से डिबेट्स हुए, राइट, और उनमें से कुछ जो थोड़े बहुत स्निपेट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Katie Shah said that the right to useful employment could and should be made real by a categoric obligation on the part of the state to provide useful work to every citizen who was able and qualified. कि जो भी qualified और able है उसे उसके accordingly जो employment है हर citizen को मिलनी चाहिए. B. Das spoke against classifying the functions of the government as justiciable and non-justiciable. क्या justiciable है और कौन क्या चीज़ non-justiciable है? I think it is the primary duty of the government to remove hunger and render social justice to every citizen and to secure social security. The teeming millions do not find any hope that the Union Constitution will ensure them freedom from hunger, will secure them social justice, will ensure them a minimum standard of living and a minimum standard of public health. उन्होंने किसके अगेंस्ट जो है वो डिस्कशन करी कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन जस्टिसिएबल कौन से है और नॉन जस्टिसिएबल, मीन्स उनके हिसाब से कि जो हमें हंगर और सोशल जस्टिस जो है हंगर को रिमूव करना है और हर सिटीजन को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. Dr. Ambedkar lays special emphasis on directive principles which cannot be overlooked, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. Though they cannot be challenged by law, they will empower the weaker sections of the society. Directive principles के ऊपर उन्होंने जोर दिया to empower the weaker sections of the society. On land reform, Nehru said that the social forces were such that law could not stand in the way of reform. An interesting reflection on the dynamics between the two. If law and parliaments do not fit themselves into the changing picture, they cannot control the situation. उन्होंने land reforms के ऊपर जो है वो उसके ऊपर अपनी बात रखी. Jaipal raised the issue of the tribals protection and interests. He was supported by Nehru. जयपाल के आइडिया ट्राइबल प्रोटेक्शन का जो है और उनके इंटरेस्ट को वॉच करने का उसको नेहरू जी ने भी सपोर्ट किया. के सांथनम्स emphasized that the state shall organize village panchayats and endow them with the powers and authority to be effective units of local self government. And similarly, the T.A. Ramalingam Chatyar added the clause for promotion of cottage industries. जो cottage industries हैं उनको promote किया जाए on cooperative lines in rural areas. Veteran parliamentarian Thakurdas Bhargava added that the state should organize agriculture and animal husbandry on modern lines. These were few snippets on debates on different issues. Competing interests, the constitution and social change. India is a multi-religious and multicultural society with distinct streams of tribal culture. The impact that culture, religion and caste have on the urban-rural divide, rich-poor divide, illiterate-literate divide is varied. Deeply stratified by caste and poverty, there are groupings and subgroupings among the rural poor and urban working class. Competing interests operate on the Indian social scene and demand for control of the state's resources. जो हमारा भारत देश है वो मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और इम्पैक्ट ऑफ कल्चर रिलीजन कास्ट जो है वो अर्बन रूरल डिवाइड पर उसका बहुत पड़ता है. एंड देर आर रिच पुअर डिवाइड आल्सो, अर्बन रूरल डिवाइड है, रिच पुअर डिवाइड है, लिटरेट इलिटरेट डिवाइड है, अलग अलग जो है वो वेरी भी करते हैं, इम्पैक्ट जो है उन पर वेरी करता है. और जो कास्ट और पॉवर्टी और इसी तरह से ग्रुपिंग्स हैं, सब ग्रुपिंग्स हैं अमंग द रूरल पुअर एंड द अर्बन वर्किंग क्लास. तो जो कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं
ऑपरेट ऑन द इंडियन सोशल सीन, वो उस पर जो है ऑपरेट करते हैं और जो डिमांड करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज. However, there are some basic objectives laid down in the constitution and which are generally agreed in the Indian political world as being obviously just. Right? कि कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि इंडियन पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो एग्री किए जाते हैं बाय दिस कंपीटिंग इंटरेस्ट. These would be empowerment of, what are those? Empowerment of the poor and marginalized, poverty alleviation, ending of caste and positive steps to treat all groups equally. Means poor को empower करना, marginalized को और poor को empower करना, poverty को ख़त्म करना, caste को end करना, positive steps to treat all groups equally. सब लोगों को, हर ग्रुप के हर व्यक्ति को जो है equally treatment जो है मिले. Competing interests do not always reflect a clear class divide. Take the issue of the close down of a factory because it emits toxic waste and affects the health of those around. है ना, कहते हैं कि हमेशा जो है वो क्लियर क्लास डिवाइड जो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं. कहते हैं जैसे सपोज करो किसी फैक्ट्री को बंद करने की बात आती है, क्यों? क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता है, जो टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं, वो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं जो उस एरिया में लोग रहते हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं. दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ which the constitution protects, right? तो वो ये जिंदगी का सवाल है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है. बट द अदर साइड क्या है? द क्लोजर विल रेंडर पीपल जॉबलेस. अगर वो फैक्ट्री बंद कर देते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे. अगेन लाइवलीहुड अगेन इज a matter of life and the constitution protects. So the Constituent Assembly was fully aware of this complexity and plurality but was intent on securing social justice as a guarantee. Constitutional norms and social justice. First of all, what is the difference between law and justice? It is useful to understand that there is a difference between law and justice. The essence of law is its force. Law is law because it carries the means to coerce or force obedience. The power of the state is behind it. The essence of justice is fairness. Justice क्या है? Fairness. Any system of laws functions through a hierarchy of authorities. So law क्या है? Law is its force, right? और law जो law है क्योंकि ये means to coerce और force obedience कि उसको obey करना वो जो है वो carry करता है. एंड उसके पीछे स्टेट की पावर होती है. और सेंस ऑफ जस्टिस क्या है? फेयरनेस, कि सबको न्याय जो है वो एक सा मिले, फेयरनेस होना, दैट इज कॉल्ड जस्टिस. The basic norm from which all other rules and authorities flow is called the Constitution. It is the document that constitutes a nation's tenets. The Indian Constitution is India's basic norm. All other laws are made as per procedure the Constitution prescribes. जो हमारे संविधान में बताया गया उसके अनुसार ही जो है सारे जो कानून है वो बनते हैं. All other laws are made as per the procedure the Constitution prescribes. These laws are made and implemented by the authorities specified by the constitutions. और ये लॉ कौन इम्प्लीमेंट करता है? जिनको संविधान द्वारा जो है मान्यता दी जाती है. A hierarchy of courts which too are authorities created by the constitution. ये भी संविधान द्वारा ही उनको अथॉरिटी दी गई है. तो जो कोर्ट्स हैं, इंटरप्रेट द लॉज, वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं. वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट, जहाँ कोई झगड़ा होता है. The Supreme Court is the highest court and the ultimate interpreter of the Constitution. जो higher authority है वो हमारे पास वो कौन सी है? Supreme Court. Fundamental rights. Let us talk about the fundamental rights of Indian citizens. Indian citizens are provided certain basic rights by our Constitution to live a better life, and these rights are known as fundamental rights, which are as under: right of equality, right of freedom. What does it mean? Freedom of speech, expression, movement, occupation, settlement, etc. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है आपका तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो. राइट टू एजुकेशन, रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एनहांस्ड द सब्सटेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन मैनी इंपॉर्टेंट वेज. एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स. अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके अधिकार आपसे छिन रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. Now let us conclude.
The constitution is not just a ready referencer of do's and don'ts for social justice. केवल मात्र उसमें do's और don'ts ही नहीं है social justice के लिए. It has the potential for the meaning of social justice to be extended. Social movements have also aided the courts and authorities to interpret the contents of rights and principles in keeping with the contemporary understanding on social justice. Law and courts are sites where competing views are debated. The constitution remains a means to channelize and civilize political power towards social welfare. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो केवल डूज और डोंट्स नहीं है सोशल जस्टिस के लिए. इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस टू बी एक्सटेंडेड. जितने भी सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो एडेड द कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज़ टू इंटरप्रेट द कंटेंट्स ऑफ राइट्स एंड प्रिंसिपल. आपके अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं. एंड लॉ एंड कोर्ट्स जो हैं वो साइट्स हैं जहाँ पर कंपीटिंग व्यूज़ जो हैं वो डिबेट किए जा सकते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ज़रिया है चैनलाइज करने का और सिविलाइज करने का पॉलिटिकल पावर्स को टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द कैपेसिटी टू हेल्प पीपल because it is based on basic norms of social justice. जो संविधान है वो लोगों की मदद कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये बेसिक नॉर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस पर ही आधारित है. For instance, the directive principle on village panchayats was moved as an amendment in the Constituent Assembly by K. Santhanam. After 40 odd years, it became a constitutional imperative after the 73rd Amendment in 1992, which we will be dealing in the next section. Thank you students and friends. I hope Constitution के बारे में आपको जो different concepts हमने discuss किए वो समझ आए होंगे. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पंचायती राज एंड द चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. So I request all of you to like, share and subscribe.